Hold on, hold on. मैम मुझे तो कौन देखने वाला है यूट्यूब पे? मुझे नहीं रही, मेरे पास स्टोरेज के लिए डेटा नहीं है, तो मैं यूट्यूब पे स्टोर कर रही हूँ। अच्छा, मेरे को लगा कोई और भी देखने वाला। नहीं, वो अपलोडिंग को फिर वापस टाइम लेता है ना, तो भी बेटर है यहीं से कर लो फिर। ठीक है, चलो। वो प्रतीक नहीं दिखाई दे रहा ना मुझे, उसका मैं सोच रहा था आवाज म्यूट करना पड़ेगा। दर्शकों, अभी हम लाइव जा रहे हैं जूम पे से यूट्यूब पे। तो आप सभी से निवेदन है, आप अपनी कुर्सियों की पीढ़ी बांध लीजिए। Let us come back to the problem. Okay. वेलकम मैम। Okay. सिर्फ बैंक अकाउंट का नंबर दे देता, मैं मुझे ट्रांसफर कर दो मैम। When a cash is received from Shyam, journal entry is cash account debit to Shyam. तो शाम के लेजर पोस्टिंग में कैसे पोस्टिंग करेंगे? So come to the Shyam ledger account. Date, put the date October 1st. 1st October 2015. Sorry, this transaction was 15 का, मेरा डेट यहाँ पे गलत है, please change that. Okay, so 1st October 2015. What is happening now? The Shyam is paying the cash. So cash account debit to Shyam. So come to the Shyam account credit by cash. How much cash he gave? Cash कितना दिया Shyam ने? 90 rupees. So amount column में mention is 90. अब जो कैश दी उसकी कोई ड्यू डेट होगी क्या? नहीं होगी, right? So once you receive the cash on 1st of October, that 90 rupees, he should not be charged the interest from the next day, from 2nd of October till the 1st of May. तो उसे 200 रुपीज में से हमने पहले 200 रुपीज के ऊपर पूरा 123 डेज का टिल द अकाउंट इज सेटल टिल 1st of May, पूरा 123 का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. ओके, यू कैन डू दिस इंटरेस्ट कैलकुलेशन. डू इट, पुट इट ऑन योर कैलसी, 200 multiplied by 123. Number of days is 123. They said you have to assume number of days is 365 days. So 200 multiplied by 123 divided by 365 multiplied by rate of interest is 6%. Never write in the exam percent ka sign. Do it 6 divided by 100. Okay. So what is the interest coming? 2.04. Let's see, it has to be rounded off to the nearest 2 digits. Okay, yeah, 4.04. 2 digits तक हमें इसको round off करना है. 4.04. ठीक है. तो हमने तो उसको पूरे 123 डेज का इंटरेस्ट चार्ज लगा दिया, बट इन बिटवीन उसने 1st of October को कुछ पेमेंट किया, तो 90 रुपीज के ऊपर हमें उसको कौन सा इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है, उसके भी नंबर ऑफ डेज हमें निकालने पड़ेंगे. कितने डेज का इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है. तो अगेन नेक्स्ट थिंग दैट वुड कम इज 1st of October 2015. Next date will also come 1st of October 2015 when we are receiving the cash from him. Again number of days कितने आएंगे देखो, इसमें भी 1st October डेट को एक्सक्लूड करना है. करेक्ट. तो वापस how many number of days will be there? Same. October के 30, November के 30, December 31, Jan 31, Feb 1. Again for 123 days, the start date has to be excluded, end date has to be included. Okay, so 123 days के लिए इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो. 120, there will be no due date to this because ये कैश पेमेंट मिला है हमें, इसका कोई ड्यू डेट नहीं होगा. बिल इनवॉइस रेज किया और इतने इतने पीरियड का अलाउ किया, नथिंग लाइक दैट. ओके, सो कैलकुलेट दैट.
Okay, so take it. How much is the amount? 90 rupees he paid. So put it is equal to 90 multiplied by 123 days divided by 365. You have to graph, Sahil, graph the problem. Multiplied by 6 divided by 100. Take it to the 2 decimal. तो यहाँ पे हम 1.82 ले सकते हैं, 1.82. Yeah. Take it up to 2 decimal, 1.82. You can use 2 connecting pages in exam also to solve this problem, as there are like 6 columns on one side, 6 columns on another side. Okay. Yes. Moving forward. Next transaction. October 21st को ये transaction हुआ. Goods purchase from Sham. हमने शाम से goods purchase किए, 500 rupees की due date दिया है. Okay. चलो, come on, start. Which side will you post? Goods purchase from Sham. Which side we are going to post it? 21st October की transaction date है. हम purchase कर रहे हैं शाम से. तो पहले journal entry को analyze करो. Credit वाली journal entry. Credit वाली journal entry को analyze करो. पट्टी पेन्सिल वर्गात घेऊन बसायचं अकाउंटच्या अकाउंटच्या पेपरला कॅल्सी विसरतो. ओके चलो, कहाँ पे एंट्री पोस्ट किया बताओ, कौन सी साइड में? डेबिट और क्रेडिट. परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, राइट. तो एंट्री कहाँ पे जाएगी, डेबिट या क्रेडिट में? ऐसे शाम का अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, क्रेडिट. तो क्रेडिट साइड में पुट द डेट फर्स्ट, 21st of October. ट्रांजैक्शन की डेट लिखो यहाँ पे हमेशा 21st of October. ठीक है. इसके बाद बाय गुड्स परचेज फ्रॉम शाम. तो शाम अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय परचेज. Now when we are purchasing, actually we have to pay him the money, correct? तो जो भी हम इंटरेस्ट उसको चार्ज करने वाले होंगे उसमें से ये इंटरेस्ट हम माइनस कर देंगे. दैट्स व्हाट जो हम उसे चार्ज कर रहे हैं ना, वो हमेशा डेबिट साइड में आएगा. वो हमेशा डेबिट साइड में आएगा, एज इफ वी हैव टू रिसीव फ्रॉम हिम, एंड दिस इज ऑन अ क्रेडिट साइड, समथिंग दैट वी हैव टू पे टू हिम. ठीक है. तो वापस ऑन दिस परचेज ट्रांजैक्शन there is a due date given. What is that? It is due on 1st of December. So write the due date 1st of December. What is the amount? Purchase का amount है 500. Calculate the number of days. Exclude the due date. जिस दिन पेमेंट ड्यू है उसको एक्सक्लूड करो एंड एंड डेट को इंक्लूड करो. तो व्हेन आई एम राइटिंग हियर 1st December 2015, एक्सक्लूड करना है दिसंबर के एक दिन को. तो दिसंबर में होते 31 days minus 1 day become 30 days. Jan is 31 and Feb का end date has to be excluded, right? End date is 1st of Feb. 1st of Feb को include करना है. So how many number of days we have? 62. So put the number of days 62. This is the interest that we have to pay him because हमने credit पे purchase किया. Okay? This is the interest that we have to pay him. So put on 500 amount for 62 days out of 365 days, interest at the rate of 6/100. You can round it off to 5.1 almost. Yeah, 5.10. Okay. 5.10. Done. Next transaction.
अब जैसे शाम हमें धीरे धीरे पैसे दे रहा है, हम भी शाम को कुछ कुछ पेमेंट करते जाएंगे। जो भी हमने परचेज किया था मे बी उसके लिए हमने नेक्स्ट पेमेंट उसे किया है, which is for 330 amount. So November 1st we paid to the Sham 330 amount. What is the journal entry that we are going to pass? Journal entry क्या होती है सोचो पहले एक मिनट के लिए। When we are making a payment, yes I कैश गया, so शाम अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, सो लेजर पोस्टिंग में कौन से साइड में पोस्टिंग जाएगा, डेबिट या क्रेडिट? शाम का लेजर बना रहे हैं हम लोग, हाँ। तो डेबिट साइड में पोस्टिंग जाएगा टू कैश, करेक्ट। राइट डाउन, डेबिट साइड में टू कैश। राइट डाउन द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज November 4th। November 4th। डन। अब इसकी कोई ड्यू डेट होगी कि पेमेंट की? देयर इज नो ड्यू डेट। ओके, पेमेंट जिस दिन मिल रहा है उस दिन ही मिल रहा है, तो उसका कोई ड्यू डेट एज सच नहीं है। नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हमने जो उससे परचेज करे थे हमें उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट देना था। हमने तो पूरा 62 डेज का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया, बट उसने बीच में ही कोई तो पेमेंट कर दी। सो 1st of November से लेके वापस 1st of Feb तक का इंटरेस्ट हमें उसे चार्ज करना नहीं है। तो जो गलती से यहाँ पे 5.1 रुपीज में इंक्लूड हो गया है उसे हटाने के लिए नाउ विल हैव टू डू एन इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ओके, क्लियर? यस, समझ में आ रहा है क्या? आर यू गेटिंग द कंसेप्ट? लॉजिक समझ में आ रहा है? पूरा का पूरा हमने चार्ज तो करके रख दिया उसे 62 डेज का, ये समझ के कि उसने कोई भी पेमेंट नहीं की, बट इन बिटवीन ही मेड सम पेमेंट। तो इस 5 रुपए जो हमने चार्ज किया, हमने उसे पे करना था, उसमें से हमारा इंटरेस्ट कम हो जाएगा। सॉरी, दिस इज परचेज वाला ट्रांजैक्शन। तो हमें उसे जो 5 रुपए पे करने थे उसमें से कुछ इंटरेस्ट की अमाउंट कम हो जाएगी, जिसका कैलकुलेशन हम यहाँ पे करेंगे। ओके, तो पुट द डेट नीचे 1st of November 2015। अगेन नंबर ऑफ डेज कहाँ से काउंट करना स्टार्ट करोगे? नवंबर का कितना नंबर ऑफ डेज कंसिडर करें नवंबर के? 29, okay. Now Manas, how many number of days should be considered for November? क्या मैम मेरी आवाज मिस कर रहे थे क्या मैम? ना चलो चलो बोलो, नवंबर के कितने डेज होते हैं? कौन सा ट्रांजैक्शन चालू है मैम आपका? नवंबर के कितने डेज होते हैं? 30 डेज होते हैं नवंबर के, ठीक है। जैसे कल 30 नवंबर है तो नवंबर के 30 डेज होते हैं। तो नवंबर के 30 डेज में से 1st of November हटा कंसीडर करना। तो कोई यहाँ पे बैठा है ना, उसके लिए बोल दिया मैं, ही इज काउंटिंग ऑन दिस नवंबर के कितने डेज होते हैं। ओके, साहिल इज काउंटिंग ऑन दिस नवंबर के कितने डेज। ओके ओके, तो बोलो 30 नवंबर क्या करें, 29 डेज ले या 30 डेज ले? यहाँ पे 29 वो आपने बोला ना एक दिन छोड़ने का, चालू में 30 जिस दिन का ट्रांजैक्शन है उस दिन स्टार्ट डेट को छोड़ देना है। तो नवंबर के 29 डेज, दिसंबर के 31 डेज, जैन की 31 डेज और फेब का एंड डेट को इंक्लूड करना है। 1st of फेब को इंक्लूड करना है, एंड डेट को इंक्लूड करना है। डन। 63 डेज आए हैं मेरे, आप लोग देख लो। I've got 63 days. रॉन्ग मैम है, रॉन्ग है आपका 62 है। No, wrong. Sorry, formula is wrong. Sorry. देखो यही है, एक्सेल को गलत इंस्ट्रक्शन दिया तो आंसर गलत ही आया। तो 92 डेज। 92 हाँ 92, करेक्ट। हाउ मच अमाउंट वी रिसीव? अमाउंट लिख लो पहले, 330 रुपए, 330। अगेन कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन दिस। इसका कोई ड्यू डेट नहीं लिखना है आपको। 330 मैम मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है मैम। 92 multiplied by 365 multiplied by, you can move on to the next।
क्या मूव ऑन? नहीं मैम। डिवाइडेड बाय 4.99 यानी 5 रुपए, राउंडेड ऑफ 5 रुपीज वी कैन टेक इट। ओके, राउंडेड ऑफ 5.00 ऐसा लिखो तो आप लोग डेसिमल प्लेसेस में कंफ्यूज होंगे। 5.00 ऐसा लिखो। ओके, या चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगेन पेड टू शाम, अगेन 1 दिसंबर को शाम को पे किया। वेरी इजी, कम 1 दिसंबर पुट द डेट 1 दिसंबर। अभी कैलकुलेट करो फटाफट, चलो डोंट वेस्ट टाइम। 1 दिसंबर टू कैश, एंड वाला इसका इंपॉर्टेंट है 330। वी अगेन पेड हिम। अगेन फाइंड आउट द नंबर ऑफ डेज। 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को एक्सक्लूड कर दो तो अगेन दिसंबर के 30 डेज आ जाएंगे हमारे। उसके बाद जैन के 31 एंड पेज का। अरे मैम डायरेक्ट यूज करो ना मैम। 30 डेज 2 days 30 62 डेज आएंगे। 62 डेज के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। देखो कौन से साइड में लिखना है ये आपको सबसे पहली बात तो समझनी चाहिए, राइट। सो 330 मल्टीप्लाइड बाय 62 डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय 6%, दैट इज 6/100, so which is 3.36। 2 डिजिट, ये डिजिट कॉपी राउंड ऑफ करो जब नंबर मोर देन 5 होगा आगे का नंबर। ओके, सो 3.36। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अगेन गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम। 5 दिसंबर को हमने गुड्स परचेज किए श्याम से, सो परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, कम टू श्याम अकाउंट क्रेडिट साइड, बाय परचेज, पुट द डेट December 5th, put the date 5th December 2015। ओके, तो यहाँ पे हमने किया बाय परचेज से, शाम से परचेज कर रहे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, श्याम अकाउंट क्रेडिट साइड, बाय परचेसेस अमाउंट इज 500 ड्यू ऑन 1st of Jan, ड्यू ऑन 1st of Jan, 500 rupees ड्यू ऑन 1st of Jan। गो बैक, कैलकुलेट द डेट 1st of Jan, स्टार्ट डेट को एक्सक्लूड करो, दिस इज 2016, so carefully write the year, due date is 1st Jan 2016। तो 31st डेज होते हैं जान के, उसमें से स्टार्टिंग का डेट एक्सक्लूड करना है, इसलिए 30 डेज लिए हैं एंड 1 डे ऑफ पे, दैट इज 32 डेज। कम टू नंबर ऑफ डेज 32, पुट इट ऑन योर कैलसी, 500 मल्टीप्लाइड बाय मैम रॉन्ग है मैम। 31 डेज है मैम। 365 मल्टीप्लाइड बाय, अरे मैम नंबर ऑफ डेज रॉन्ग है मैम। 31 डेज है। ओके 31, सॉरी, जैन की 30 एंड फेब का 1, 31। 2 डेसिमल प्लेसेस 2.63। मैं आपने 32 डेज लेके कैलकुलेट किया। 2.55 32 डेज यहाँ पे मेरा 31 करना है। होल्ड 31 ना, जैसे 32 जैन का एक दिन छोड़ा 30 हुआ, फरवरी का एक दिन 31 डेज। हाँ 2.55 आ गया, बता कैलसी में, बता 2.55 2.55 क्यों ये, इफ इट इज मोर देन 5, आगे का डिजिट इज मोर देन 5, यू हैव टू कन्वर्ट इट टू 5 टू द नेक्स्ट डिजिट। हाँ तो उसको तो राउंडिंग ऑफ कहते हैं ना। 2.55 2.547 आ रहा है, तो 7 इज मोर देन 5, तो पहले का डिजिट को आप 1 से बढ़ाना है आपको, तो दैट विल बी 2.55। Next, goods purchased from Shyam. Again, goods purchased from Shyam, December 10th. Put the date, 10th December. I purchased it. Due date, 1st Jan. Due date change नहीं हो रही है. Due date change नहीं हो रही है, पर number of days change होंगी. क्योंकि December नहीं होंगे। 10th December हमें exclude करना है. ओके 10th दिसंबर हमें, अरे मैम ड्यू डेट दी हुई है। अरे ड्यू डेट सेम है बट नंबर ऑफ डेज चेंज हो रहा है, ये बोल रही हूँ मैं मानस। अरे किसके होंगे मैम? ड्यू डेट सेम रहेंगी तो नंबर ऑफ डेज किसके चेंज होंगे? हाँ ओके सॉरी,
10th ऑफ दिसंबर का ट्रांजैक्शन है, 1st ऑफ जैन में ट्रांजैक्शन हुआ है, तो ड्यू डेट सेम होने की वजह से नंबर ऑफ डेज सेम, 31 डेज. व्हाट इज द अमाउंट? 200. 1.02. 231 days. Put the formula. 200 multiplied by 31 divided by 365 days multiplied by 6 by 100. Done. Last transaction 2016 Jan paid to Sham. Sham को पे किया. हाँ, what happened? हाँ, buy purchase से Jan first. Number of days will remain same. Due date से first of date तक calculate कर रहे हैं ना हम. Due date से हाँ. यहाँ पे ड्यू डेट लिख रहे हैं ना, नंबर ऑफ डेज इज लाइक ड्यू डेट लिख रहा है. एक्चुअली वी शुड राइट हियर ड्यू डेट ही लिखना चाहिए ना हमको यहाँ पे, तो कंफ्यूजन नहीं होगा. ड्यू डेट ही लिख रहे हैं हम यहाँ पे. नंबर ऑफ डेज कैलकुलेशन यहाँ पे लिखो ड्यू डेट. चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, बता कितना इंटरेस्ट आए. पेड टू शाम ₹600 ऑन 1st ऑफ जैन. पेड टू शाम, शाम को पे किया हमने. कितना पे किया? 600 रुपीज पेड टू शाम. शाम अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कम टू कैश. कब पे किया हमने? कब पे किया हमने? 1st ऑफ जैन को पे किया. Yes. 1st जैन 2016. ड्यू डेट वही रहेगी. ड्यू डेट पे डेट की डेट ड्यू डेट ली जाएगी. देखो जहाँ पे आपको ड्यू डेट नहीं दिया है वही डेट लेनी है जिस दिन का ट्रांजैक्शन है. जहाँ पे ड्यू डेट नहीं देंगे, डेट विल बी द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन. तो अगेन 1st ऑफ जैन 2016 से लेके 31 डेज आएंगे 600 रुपीज के ऊपर. 600 multiplied by 31 days divided by 365 multiplied by what? बताओ. 6 by 100. 3.05. It can be rounded off to 3.06. 3.057 है, इसलिए राउंडेड ऑफ टू 3.06. मैम एक बार फिर से करना जरा ये वाला. ओके, सो दिस सेज दैट हमने पेमेंट किया है शाम को 600 रुपीज का. ठीक है, हमने शाम को पेमेंट किया 600 रुपीज का. इसकी ड्यू डेट नहीं दी है. ट्रांजैक्शन कौन से डेट का है? 1st ऑफ जैन. तो जब आपको ड्यू डेट नहीं होती ना, पेमेंट मिलने की या रिसीव की या पेमेंट की कोई ड्यू डेट नहीं होती है, वही डेट इज कंसिडर एज अ ड्यू डेट. तो सो 1st ऑफ जैन से लेके 1st ऑफ फेब तक कितने डेज कैलकुलेट करेंगे? द डे ऑफ एन ट्रांजैक्शन हैज टू बी एक्सक्लूडेड. यानी 1st जैन का 1st जैन को एक्सक्लूड करो. जैन के 31 डेज में से एक दिन चला गया, तो कितने डेज रह गए? 30 डेज रह गए. अब फेब का एक दिन इंक्लूड करो, 31 डेज. तो 31 डेज के लिए 600 रुपीज के ऊपर आपको इंटरेस्ट निकालना है 6.6%. So calculation is this. Look at this calculation. 31 days divided by 365. Okay.
Okay, so next transaction is paid sold to Sham. So Sham's account debit to sales. So come to the Sham's account debit side. Put two cells. Transaction is 9th of Jan. Transaction की date है 9th of Jan. 20 rupees का sell किया है and due date is 1st of Feb. Due date is 1st of Feb. So यहाँ पे लिखो due date के column में 1st of Feb. I just scroll up. ओके तो 1st of Feb. अब कितने नंबर ऑफ डेज आएंगे? द डे हैज टू बी एक्सक्लूडेड. फर्स्ट डे हैज टू बी एक्सक्लूडेड. तो इस सेल्स के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा बिकॉज वी आर मेकिंग द स्टेटमेंट ऑन द सेम डे. फर्स्ट Feb को ही हम ये स्टेटमेंट बना रहे हैं तो इस ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा. क्लियर? यस. इस ट्रांजैक्शन जिस दिन हम ये स्टेटमेंट बना रहे हैं उसी दिन ये ट्रांजैक्शन हुआ तो एक दिन का इंटरेस्ट नहीं लगेगा. डेट इज नॉट इंक्लूडेड. स्टार्ट डेट इज नॉट इंक्लूडेड. Now what we have to do? Look at first the position of interest. Okay, तो रफ पहले डेबिट साइड के इंटरेस्ट का टोटल लो, फिर क्रेडिट साइड के इंटरेस्ट का टोटल लो. Whichever is more, find it out. कौन सी साइड बड़ी है, find it out. Okay. I just check the number till that 3.36. 0.45, 3.36 and 3.06. Okay, and debit side बढ़ी है, credit side में 1.82, 5.10, 2.55, 1.02. कितने का डिफरेंस आ रहा है? तो डेबिट साइड बढ़ी है तो एंड में डेबिट साइड का टोटल लो 10.46. मेरा तो दोनों भी सेम ही आ रहा है. क्रेडिट साइड की टोटल कितनी आ रही है आपकी? देखो तो जरा 4.0. अच्छा सॉरी माय 5 इज नॉट काउंटेड हियर. ओके सॉरी. द डेबिट इज 15.46. डेबिट इज 15.46 एंड क्रेडिट इज 10.48. ओके, सो डेबिट साइड की टोटल को क्रेडिट साइड के टोटल में पहले कॉपी कर दो सिर्फ इंटरेस्ट वाले कॉलम में. ठीक है. अब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकालो. डेबिट की टोटल मैंने क्रेडिट में कॉपी किया. जैसे हम नॉर्मल तरीके से बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं वैसे यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकालो. 15.46 माइनस सम ऑफ ऑल द नंबर्स ऑन द क्रेडिट साइड. 1.82 प्लस 5.10 प्लस 2.55 प्लस 1.02. इज योर बैलेंस कमिंग 4.98? 9798 ऐसा कुछ तो आएगा. Yes. $4.97. Okay. Write down their date. 1st of Feb 2016 date डालो. Credit side में लिखो by balance of interest. By balance of interest 4.9798 आपको जो भी आया है 4.97. अब व्हाट डज दिस मीन? देखो जब हमने उसे सेल्स किया था दिस अमाउंट शोज द अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम हिज साइड इन अ केस अ पर्सन इज योर डेटर. ओके, तो डेबिट बैलेंस मतलब हमें उससे ये पैसे लेने थे. डेटर के डेबिट साइड में जो चीज आई हमें उससे ये पैसे लेने थे और ये इंटरेस्ट हमें उसे देना था. तो कौन सा इंटरेस्ट बढ़ा है? दिस इज द इंटरेस्ट दैट वी नीड टू पे टू श्याम because हमने सेल्स दिस इज द इंटरेस्ट दैट वी हैव टू रिकवर फ्रॉम द श्याम. डेटर है वो. ओके, सो डेबिट साइड का इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट दैट वी हैव टू रिकवर फ्रॉम द श्याम and this is the interest that we need to pay to the Sham. Credit side का interest is the interest that we need to pay to the Sham. So debit side की interest से यानी जो interest हमें शाम से मिलना है recoverable from शाम, तो जो interest हमें pay करना है कौन सा बड़ा है? recoverable बड़ा है कि payable बड़ा है? recoverable बड़ा है, इसलिए बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखा बट वो डेबिट बैलेंस है. तो अगर ये ब्रॉट डाउन होता है तो यहाँ पे नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे उसे ब्रॉट डाउन करना है.
On first of pay, we'll have to brought it down here to interest. इस इंटरेस्ट को हमें उसी की अकाउंट में ब्रॉट डाउन करना है. बट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू राइट इट इन द कॉलम ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कॉलम यहाँ पे क्लोज हो गया. राइट इट डाउन इन द कॉलम ऑफ एन अमाउंट so that we get to know what is the total amount recoverable from him. Write down in the amount in the column of amount so that we get to know is the net receivable or payable. क्या जो भी सिचुएशन रहेगी अमाउंट की वो अपने आप पता चलेगी कि शाम से नेट में कितनी अमाउंट लेनी है इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट. तो यहाँ पे बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट निकालो एंड इसको ब्रॉट डाउन करो अपोजिट साइड. दिस इज अ क्रेडिट बैलेंस, दिस इज अ डेबिट बैलेंस रिटर्न ऑन अ क्रेडिट साइड. बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट ये डेबिट बैलेंस है जो कि यहाँ पे डेबिट साइड में हम ब्रॉट डाउन करेंगे. नाउ अगेन टेक द टोटल ऑफ हिज अमाउंट कॉलम की टोटल लो इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट. नाउ सो डेबिट साइड की टोटल है 1484.97 एंड क्रेडिट साइड का टोटल है, चेक कर लो आप लोग. डेबिट साइड की टोटल करो, मेरे हिसाब से डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है. क्या टोटल है डेबिट साइड की टोटल? 1484.97 और क्रेडिट साइड की टोटल है 1290. क्रेडिट साइड की टोटल इज 1290. सो कौन सी साइड बढ़ी है, डेबिट या क्रेडिट? कौन सी साइड बढ़ी है? डेबिट साइड बढ़ी है. तो डेबिट साइड की टोटल को कॉपी करो और अमाउंट कॉलम में क्रेडिट साइड में लिख दो. और जैसे नॉर्मल तरीके से हम कोई भी लेजर अकाउंट को बैलेंस करते हैं ना, कैसे बैलेंस करते हैं लेजर अकाउंट को हम? बाय बैलेंस कैरी डाउन करके. सो राइट डाउन हियर बाय बैलेंस कैरी डाउन on first of pay. By balance carried down, the amount will come in a amount column. Balancing number will come in a amount column. So total minus sum of all the debit numbers. 194.97 is the balance carried down. इसका मतलब नेट में हमें पैसे लेने हैं या देने हैं शाम को? डेबिट बैलेंस देने हैं, पैसे लेने माइनस हमें शाम से. ओके, डेट लेने हैं 194.97 बाय बैलेंस कैरीड डाउन. आप इसको नेक्स्ट डे पे ब्रॉट डाउन भी कर सकते हो इफ रिक्वायर्ड. क्लियर? तो ये था सबसे सिंपल तरीका करंट अकाउंट करंट को करने का. जैसे डे वाइज कैलकुलेट करते जाओ, फाइंड आउट द नंबर ऑफ डेज एंड डू इट. पहली बार करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज यू नो कहाँ पे क्या लिखना है समझ में नहीं आता है, कितने कॉलम्स होने चाहिए. एंड दैट्स व्हाट व्हेन यू गो फॉर एन एग्जाम अर्ली इन द मॉर्निंग, फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू, भले आप कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, एग्जाम को 1 घंटा जाने से पहले सिर्फ फॉर्मेट्स देखो. You know, if like in a profit and loss account, what we have to prepare, what are only the methods of goodwill. So methods of goodwill को glance through करके जाओ एक बार. आपको डिटेल में कुछ नहीं पढ़ना 1 घंटा पहले. यू जस्ट हैव टू लुक फॉर एन फॉर्मेट्स, क्योंकि एग्जाम हॉल में जाके आप फॉर्मेट भूल जाते हो. कौन से फॉर्मेट में क्या लिखना है, कौन सा अकाउंट बनाना है, इसको कौन सा अकाउंट कहते हैं, इसकी साइड कौन सी होती है. यू आर बाउंड टू फॉरगेट दिस. So instead of reading in depth something, just scan the pages. फटाफट मॉड्यूल के पेजेस स्कैन कर लो आप लोग. गुडविल मेथड्स को लिख के रखो, गुडविल मेथड्स का वो पेज पढ़ कर जाओ. इफ यू आर गोइंग फॉर मैथ्स पेपर, जस्ट रैंडमली चेक द फॉर्मूलाज 1 hour बिफोर. ओके, सो यू नो दैट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस कि फिर आपका ये नहीं होता कि इसमें क्या कौन सा फॉर्मूला कौन सा फॉर्मेट, नथिंग एल्स. चलो, so I give you one sum for an now to do it right now. One sum, do it right now.
in this working note, they have also given the transaction date and this transaction date यहाँ पे year गलत हुआ है. This should have been 2015. तो आपके मॉड्यूल में misprint हुआ है तो इसको correct कर लो. This transaction date has to be year has to be 2015. ठीक है. उसके बाद due date and then number of days को उस तरीके से calculate किया है. Now before we move on to the second method. Okay. So using the same, let's move on to the second method, product wala method. Okay. So this method is called as a preparation of an account current by means of a product and product method. Okay. I give you a pause over here, and what you have to do is again draft the same format. The problem is same. Only replace the interest column. Only replace the interest column with the product column. इंटरेस्ट वाले कॉलम को प्रोडक्ट वाले कॉलम से रिप्लेस करना है. ओके. एंड बाय द टाइम आई कम इन 5 minutes, व्हाट यू हैव टू डू इज मल्टीप्लाई द अमाउंट विद द नंबर ऑफ डेज. सेम फॉर्मेट, डेबिट क्रेडिट सब कुछ सेम है. सो प्रोडक्ट निकालना है आपको बाय मल्टीप्लाइंग द अमाउंट विद द नंबर ऑफ डेज. ओके. By multiplying the amount with the number of the days, you have to find out the product. Why, so, and how to calculate this? Hold on for 5 minutes. Prepare the format, multiply the amount with the number of days, and keep the format ready. Okay? Yes? Same problem, nothing is changed. Only find out the products.